Hello everyone, welcome to Oliveboard. My name is Varsha Diman. So in this particular session, we are going to discuss the questions that were asked in RBI Grade B year 2025 Phase 2 examination. So the aspirants who are in the class, please let me know that the voice is okay and the screen is also clearly visible to you, right? So, the most of the students who appeared for RBI Grade B 2025 Phase 2 examination, they have a mention like कि बहुत अच्छे questions थे from the management portion, if right. The level of questions was quite very good. Okay. So here in this particular session, as per the students has shared the questions with us. Okay. So on that basis, we are going to discuss about the questions and the related solutions or the answers for the questions. Okay, so the students who are there in the class, please share the sessions among your friends also, so that they also came to know like what type of questions they had faced or कैसे questions RBI grade B के phase 2 examination में पूछे गए थे, right? So let's start our discussions. Let's continue ahead. Okay, so you can have the application of Oliveboard, right? So classes का PDF आपको available. So as we all know that ठीक है आपको पहले ही we discussed about it and we know that कि morning shift में you had your exam. Okay, जो आपका paper 3 है that was conducted in the morning shift, right? That was having the questions from general finance and management, right? And in the evening shift they were having the paper 1, that is the descriptive English, or आपका paper 2 that was a ESI, economic and social. So students has provided the question like जब वो completely out of the exam scenario हो. So we came to know about this descriptive questions. ठीक है, अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. If you have any other such queries कि ये question ही था मैम जो आपने मेंशन नहीं करा है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन मेंशन कर देना. विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आल्सो इन आवर अपकमिंग सेशंस. जब मैं आपको फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, राइट? सो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट से देयर वाज नो क्वेश्चंस इन 10 मार्कर. ठीक है, 10 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं था. देयर वर टू क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स. दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लाइक द स्टूडेंट्स हु हैड स्टडीड वेल ओके बिफोर द एग्जाम, और जिसने रिवाइज किया था अच्छे से पोर्शन को, ही विल बी श्योरली एबल टू आंसर द क्वेश्चन. There was one question. Yeah, let's discuss about the question number 3. Like when I came to know that this particular question was asked in the exam, abhi descriptive ka third या fourth set में we had discussed about that particular type of question. ठीक है, चलो. So let's talk about it. The question that was asked was why employees resist organizational change. Okay, and what approach can management take to deal with such change, right? So what comes under it? I always mention whenever there come these kind of questions, firstly you have to write a very good introduction. Here you have to mention about organizational change. Okay, like what is an organizational change? You are introducing some new technologies, you are introducing some new format of doing work. Okay, and surely अगर मेरे घर में भी कोई new technology का introduction होगा, because nobody wants to move out of the comfort zone. In general यही होता है ना कि कोई भी comfort zone से बाहर आना नहीं चाहता है. And whenever you will bring something very new, so definitely they have to come out of their comfort zone to learn new skills, to work upon the new set of changes that you had introduced for them. Okay, तो employees भी organizational change को resist करेंगे initially, the reason being क्योंकि उनको उस नए specific change के according अपने आप को upgrade करना पड़े. ठीक है, and everyone is not interested in upgrading them on time. ठीक है, जब कोई requirement हो जाए तब तो आपको ये लगता है कि why we should अपग्रेड अवर सेल्फ, या फिर हम इतने कैपेबल नहीं है कि अपग्रेड करके उस नई स्किल को एक्वायर करके इस चेंज के अकॉर्डिंग मैच करें. ठीक है, तो इनिशियली आप एक ही ऑप्शन होता है, आप उसको रेजिस्ट करने लगते. तो आई ऑलवेज मेंशन व्हेनेवर यू हैव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन यूज अ एग्जांपल. यू कैन यूज अ एग्जांपल लाइक जब हमारा कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम्स, ये सभी चीजें स्टार्ट हुई थी, तो पीपल्स इनिशियली
were like कि how we can focus upon that, लेकिन situation demand था. So when situation is demanding you something और आपको उसके लिए अच्छा appreciations मिलेगा if you will adopt that particular changes, so definitely you will adopt it. ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या अप्रोच फॉलो कर सकता है चेंजेस को इंट्रोड्यूस करते टाइम? स्लोली स्लोली किसी चीज के बारे में आपको अवेयर कराए. तो व्हाट मैनेजर कैन डू, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर, स्पेसिफिक वेबिनार्स कंडक्ट कर, ठीक है, इम्पोर्टेंस बता के उस स्पेसिफिक स्किल की और स्पेसिफिक चेंज की दैट यू आर अबाउट टू इंट्रोड्यूस, कैसे आपका वर्कलोड भी डाउन होने वाला है एंड यू आर अबाउट टू गेट गुड पेमेंट, गुड सैलरी अगर आप इस चेंज को अपग्रेड कर लेते हो. ठीक है, तो मैनेजमेंट विल कंडक्ट सम पॉजिटिव सेशंस, पॉजिटिव ट्रेनिंग सेशंस, पॉजिटिव सेमिनार्स, पॉजिटिव मीटिंग्स और गैदरिंग्स, ठीक है, ताकि अवेयर करा दे आपको न्यू चेंजेस के बारे में दैट द मैनेजमेंट इज थिंकिंग टू इंट्रोड्यूस इन द कमिंग टाइम. ठीक है, this is very important, like you have to frame your answer in a very suitable manner to answer a very good question, to answer for this particular, right? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मतलब 15 मार्क्स वर्थ है भाई अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हो, मेंशनिंग एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन विद अ गुड पॉइंटर्स जिसमें आप सारे अप्रोचेस को प्रॉपरली मेंशन करते हो, यू कैन गेट श्योरली गेट अ गुड मार्क्स फॉर द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन था, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, एज अ स्टूडेंट डिस्कस, सो ऑन दैट बेसिस वी आर डिस्कसिंग इट हियर, द एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Okay, so firstly, what you have to do, you have to explain the non-verbal communication. Non-verbal communication को express करना है. ठीक है, non-verbal, that is something you are not uh, like writing something, you're not saying something, you are having some expressions. Okay, your gestures, your postures, and they are letting others know like what you exactly want to say. Okay, what are the advantages of non-verbal communication? अभी मैं एक मीटिंग में हूँ and I am not holding the correct expressions as per the presentations I am giving there. Okay, and I'm working somewhere. I'm not holding that specific hand movements while explaining you the things. ठीक है, my facial expressions, eye movements, they are not appropriate as per the situation. So you will not be able to understand about what I think I'm talking. Okay, so non-verbal communication को पहले आपने define कर, then you have to start mentioning about its advantages, so you can use specific examples to explain it appropriately. Okay, then link between non-verbal communication, leadership and organizational culture. Okay, so there are different kind of leaders. Okay, are holding the specific situations, आपके पास different types of leadership क्या होता है. ठीक है, what is leadership, like how these three are connected, आप leadership को define करो. ठीक है, leader कौन होता है, the individual who work towards a specific vision, वो एक specific vision के towards काम कर, he is having a charismatic personality, और वो जो charismatic personality होती है वो influence करती है लोगों को that they come forward to accept the words that he is saying. ठीक है, if I'm not holding a very specific kind of personality and I'm representing a public, they will not listen to me and they will not agree to me what I am saying. ठीक है, so leadership की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि that the person is having a very good communication skill. ठीक है, वजन होगा बातों में, like whatever he is saying, he will have the values or he have the weight in his words. Okay, and charismatic personality hogi and he have a vision, he always work towards a specific vision. And what is the organizational culture? See, different individuals in an organization are coming from the different backgrounds, they are representing their backgrounds, their upbringings, their knowledge and other things. Okay, so that forms the organizational culture. ये जितना ज्यादा डाइवर्स एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, इट मीन्स दैट वो ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल बैकग्राउंड्स के इंडिविजुअल्स को एक्सेप्ट कर रही है, एंड दैट इज अ ब्यूटी इन इट. ओके, तो ये कुछ टर्म्स जो है, जो एग्जैक्ट आई एम नॉट नोइंग कि कितना स्टूडेंट ने कैसे बताया, बट ये कुछ बताया, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट. या so Atithi, yes, for 15 marks question, it is mentioned in your admit card also, instructions also, I'm mentioning you here as well. 15 marks के question के लिए word limits होता है बच्चे आपका 600 words.
ये 15 मार्क्स के लिए 600 वर्ड्स का आपको आंसर फ्री and it is mentioned there in your admit card as well or instructions maybe. और 10 marks के question के लिए your answer should be of 400 words. Okay, so this is a basic word limits that you have to follow जो आपने descriptive answer practice के time पे भी follow कर. ठीक है? So is it clear to you guys? My voice is okay now, like you guys are getting what I am saying. Right? Now moving on another question. Okay. सो ये दो क्वेश्चंस हमसे 15 मार्कर्स में पूछे गए थे फ्रॉम द मैनेजमेंट पोर्शन पर्टिकुलर राइट सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द फाइनेंस पोर्शन लाइक सर हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चंस विद now you can see this is another set of question and they were also from the finance portion ठीक है अगर मैं बात करूं from the management portion ये कुछ ही questions हमें पता लग पाए हैं let's talk about them अब ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट आई एम हैविंग सम डाउट इन लाइक मेरे को नहीं समझ आया कि इसमें the theories that are mentioned here they're not related to with it directly so there was some question like student आपको अगर idea है तो please mention in the comment the question was related with which theory talks about people's attitude which affects their work ठीक है सिर्फ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी तो आपका नीड बेस्ड थ्योरी है ठीक है जो आपकी नीड्स होती हैं कि दे आर ड्राइविंग यू टू डू गुड इन योर लाइफ और दैट इज अ प्रॉपर content theory okay this is a content theory that we discussed in detail Porter and Lawler's theory that is related with the outcomes okay this is related with the outcomes this is a that it was related with the expectancy okay outcomes okay and the efforts that you are doing uh, to achieve certain goals like specific outcomes को achieve करने के लिए जो आप efforts कर रहे हो so it is a process theory and these two theories are the motivation theory right and this is a reinforcement theory basically reinforcement theory एक specific work आपसे achieve कराने के लिए perform कराने के लिए we can follow like positive reinforcement we can follow negative reinforcement like the leader or the manager can follow positive reinforcement he can follow negative reinforcement he can follow the method of punishment or he can follow the method of extinction so these are the four different types of reinforcements that a manager can work upon so that he can have the work from you okay so question was about the people's attitude which affects their work so directly from all the three options mentioned here I'm not getting कि इसमें से कौन सा आंसर रहना चाहिए so this question is quite tricky अगर आपको आइडिया है कि like what was the exact question आप में से जिन्होंने भी अपीयर किया था phase 2 में you can directly contact me with me on my telegram and there also you can mention me about the question okay so we'll discuss about it in next upcoming session okay, so none of the above is the right answer if I talk about these three options because in तीनों options का basis बिल्कुल different है ठीक है हाँ मैकलेंस थ्योरी भी था मैकलेंस नीड theory that is the need for power need for achievement and need for affiliation was it there हाँ अच्छा this was a question हाँ अच्छा ethical absolutism किया आप लोगों ने अच्छे से you know about the absolutism we discussed about it अच्छा two questions on emotional intelligence ocean okay yeah thank you for telling let's discuss about it as you had mentioned ठीक है तो या मैकलेंस थ्योरी यू आर अवेयर अबाउट इट राइट मैकलेंस थ्योरी जो आपकी मैकलेंस दो आपकी थ्योरी है दैट टॉक्स अबाउट थ्री नीड्स ठीक है नीड फॉर पावर ठीक है दैट नीड फॉर अचीवमेंट एंड द नीड फॉर एफिलिएशन राइट सो दिस इज वी डिस्कस्ड वी नो अबाउट इट ठीक है उसके अलावा यू गाइस आर मेंशनिंग देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम जनरल मैनेजमेंट टू क्वेश्चंस ऑन इमोशन अच्छा मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी था दैट मीन्स आपके अच्छे क्वेश्चन से फ्रॉम द मैनेजमेंट पोर्शन देखो स्टूडेंट्स ने आई पर्सनली आस्क्ड देम तो ये कुछ ही क्वेश्चंस का डिस्कशन हो पाया था दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग ऑल दिस क्वेश्चंस फॉर यू गाइस रिलेटिविज्म यू नो एब्सोल्यूटिज्म यू नो ठीक है एथिकल एब्सोल्यूटिज्म इस रिलेटिविज्म इस बारे में बात करता है देखो जो इंडिविजुअल्स हैं देखो हर एक रिलीजन का हर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का कुछ एक
फॉर्मेट होता है, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कि नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में देखो से दैट द डिफरेंट कल्चर्स आर फॉलोइंग द डिफरेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब डिफरेंट कल्चर्स के बेसिस पर, ठीक है, सम कल्चर द स्पेसिफिक प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड एज गुड, इन अनदर कल्चर द सेम प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड एज इनअप्रोप्रिएट। ओके, सो दैट इज अ एथिकल रिलेटिविज्म कि आप सेम ही थ्योरी हर जगह फॉलो नहीं कर सकते। So that is a ethical relativism. In that particular manner, I had explained you this thing. Absolutism, it have nothing to do with the individuals or the different culture. It will be same. ये strict एक follow रहेगा. That is ethical absolutism. Okay. We had discussed about, हाँ, yes, that is absolutism. Universally accepted moral for its country. That is absolutism. वही मैं बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। कि absolutism में कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो चेंज होगा, वो सेम रहेगा फॉर एवरीवन। दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसेप्ट। दैट इज एब्सोल्यूटिज्म। ये हमने डिस्कस किया है। इमोशनल इंटेलिजेंस वी नो अबाउट इट ना। दिस इज अ देयर आर स्पेसिफिक स्किल सेट वी आर फॉलोइंग to regulate our emotions. Okay, and ocean is a personality model. ठीक है, the big five personality model. So अभी मेरे को पता लग रहा है there are so many different questions from the management portion. ठीक है, I'm mentioning all the questions here in a separate slide. Just give me a minute. Okay. Yeah, so I'm mentioning the questions to you here. Just give me a second. Hmm. Let's mention it here. ठीक है, यहीं पे मैं mention कर देती हूँ. Okay. Uh, yeah. So there was a question from emotional intelligence. There was a question from ocean. ठीक है, ocean क्या है? That is a big five personality model. Right? There was a question from ethical relativism. Okay, ethical absolutism. Right? One question from Mackillance. ठीक है, जो हमारा Mackillance का, that is the need for power, need for affiliation. ये जो हमारा थ्योरी था, and the need for achievement, right? Okay. So these were the questions. Manager was sanctioning wrong loans and questioned that if everyone is doing the same, how it is wrong. Yeah, it is relativism. Okay. Conscientiousness is high in the manager, what he will be as a best. Okay. Yeah, so Ashish has mentioned some questions. Okay. इसको हम particularly भी discuss कर लेंगे in one session, but here अभी इतना idea आप लोग को लग गया, that is really good. ठीक है. So these were the questions, and there were three questions from general management, like management के approaches and management के portion से related थे directly. Three questions from general management. इसका मतलब we can mention ना कि management का portion quite doable था. Is it so? So we can say na that was quite doable. If you had studied everything well, so you will be able to answer most of the question. And there was one such questions I found. Okay, a growing manufacturing company initially relied heavily on precise work measurement techniques to improve efficiency. Okay, so this was also one question. Let's talk about it. Manager conducted detailed time studies, motion studies, and work standardization exercises to break tasks into smaller units and ensure maximum productivity from each workers. Over time, as the organization expanded, coordination became difficult, so it adapted a strict hierarchy-based structure with clear authority lines to main control. Later realizing that employees' involvement improves motivations and decision making, the companies moved towards a participative style. ठीक है, participative style of leadership जहाँ पे सभी individuals का participation must था, where workers' opinion were actually included in planning and problem solving. Eventually, as a business environment became more dynamic, the company embraced a system-based approach. Okay, that system-based approach of management, right? Recognizing that all departments are interrelated and their organizational success depends upon the smooth functioning of the entire
entire system. Okay, so there was some certain passage related to this. Yeah, ठीक है, हाँ ये जनरल मैनेजमेंट रिलेटेड पैसेज और ऐसा कुछ क्वेश्चन था. Okay, so this is all about the questions that was from the management portion in your exam, and we can say that questions are quite doable. ठीक है, मैनेजमेंट के सभी क्वेश्चंस एज students has shared with me now also मैंने सभी डिस्कस कर लिया, but if you have any other question in your mind that is skipped in this discussion, please share with me on my telegram. I'll take specific session जिसमें मैं detailed analysis करा दूँ. ठीक है, so make sure that you guys will share all the questions with me, and thank you so much for being the part of the session. Okay? और प्लीज मेंशन आप लोग एक कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, कैसा आपका पेपर हुआ. ठीक है, आप ये भी मुझसे शेयर कर सकते हो. दीज आर द क्वेश्चन जो ईएसआई के पोर्शन के मैम विल डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट कमिंग सेशन. ओके, सो हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन, राइट? ओके, बाय बाय.